माही शेख। टुडे वी आर हियर इन न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद। आज आपको प्रॉपर्टी टूर कराएंगे स्टेट सोल्यूशन के एक प्रोजेक्ट सिटाडेल 7 का, जो लोकेटेड है न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। आइए चलते हैं इसकी मजीद अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज को डिस्कस करते हैं। हमारी आज की प्रॉपर्टी सिटाडेल 7 न्यू ब्लू एरिया से द सेंटोरस मॉल 1 मिनट पर है, पिम्स हॉस्पिटल 1 मिनट पर है, यूफोन टावर 2 मिनट पर है, स्टॉक एक्सचेंज 3 मिनट पर है, ब्लू एरिया 3 मिनट पर है। फैसल मॉस्क जाने के लिए 4 मिनट की ड्राइव चाहिए। मैं इस वक्त अपनी आज की लोकेशन सिटाडेल 7 के बाहर मौजूद हूँ। ये ऑलमोस्ट 5 कैनाल पर है और इसके कवर्ड एरिया की बात करें तो ये 3,45,000, इसकी डायमेंशन 120 बाय 200 है। ये प्योरली बिजनेस प्रोजेक्ट है। सिटाडेल आपको ऑफर करता है बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 19 फ्लोर। 4 बेसमेंट ये स्पेशली डेडिकेटेड कर रहा है कार पार्किंग के लिए। ग्राउंड प्लस 4th फ्लोर तक ये आपको ऑफर करता है शॉपिंग मॉल। 6th फ्लोर पर ये आपको ऑफर करता है सर्विसेज, जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम, CCTV एंड मेंटेनेंस स्टाफ। 6th फ्लोर के सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ओपन टेरेस रेस्टोरेंट भी आपको ऑफर किए जा रहे हैं। 7 to 20th फ्लोर तक ये आपको ऑफिसेस प्रोवाइड कर रहा है। सिटाडेल मॉल के शॉप साइजेस की बात करें तो ये आपको मिनिमम शॉप साइजेस ऑफर करता है 302 स्क्वायर फीट टू मैक्सिमम 806 स्क्वायर फीट। सेवन टू 10 फ्लोर पर आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज के साइजेस ऑफर कर रहे हैं मिनिमम 471 स्क्वायर फीट टू मैक्सिमम 1244 स्क्वायर फीट। 11 to 20th फ्लोर की बात करें तो ये आपको ऑफिस साइजेस मिनिमम ऑफर कर रहा है 630 स्क्वायर फीट और मैक्सिमम 1849 स्क्वायर फीट। इसके साथ हम आपको बताते चलें 11 to 20th फ्लोर में आपको ओपन टू स्काई एट्रियम भी ऑफर कर रहा है। सिटाडेल 7 की अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज को डिस्कस करें तो ये आपको ऑफर करें एलिवेटर, एक्सीलेटर, कैप्सूल्स, एलिवेटर। उसके अलावा आपको फूड चेन, रेस्टोरेंट्स और उसके साथ स्पेशली डेडिकेटेड कॉर्पोरेट ऑफिस लिफ्ट और उसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी, बैकअप जनरेटर और सिक्योरिटी सिस्टम, 24/7 CCTV फुटेजेस भी आपको ऑफर किए जाने हैं। हम इसके नियर बाय की बात करें तो मारगला हिल्स इसके बिल्कुल सामने है। मेट्रो स्टेशन के सामने है। श्रीनगर हाईवे पे ये लोकेटेड है। सेंटोरस मॉल इसके नियर बाय में है और इसके बैक साइड पर पिम्स हॉस्पिटल है। यूफोन टावर वॉकिंग डिस्टेंस पर है और उसके साथ ही स्टॉक एक्सचेंज है और ये एरिया मेन ब्लू एरिया बिजनेस हब का एरिया है। सिटाडेल 7 के 2 मेन एक्सेस हैं। वन इज Ibn-Sina एंड अदर वन इज जिन्ना एवेन्यू। ये आपको 2 एंट्रेंस भी ऑफर करता है और उसके साथ ही आपको 2 डॉप लाइन भी ऑफर कर रहा है। इसकी फ्रंट रोड 20 फीट वाइड है और मेन बुलेवार्ड 80 फीट वाइड है। सिटाडेल 7 के मार्केटिंग एंड सेलिंग राइट स्टेट सोल्यूशन के पास है, जो बाएतमाद इदारा और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये आपको पेमेंट ऑफर करता है, स्पेशली 5% डिस्काउंट देता है अगर आप फुल पेमेंट करें। उसके साथ ही ये 25% डाउन पेमेंट के साथ 15 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट आपको ऑफर करता है और आपको ये 4 ईयर में पे करना है। 4 ईयर में ये सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपको पोजीशन ऑफर किया जा रहा है। मैं इस वक्त इब्न-सिना रोड पर मौजूद हूँ। मेरे लेफ्ट साइड पर पिम्स हॉस्पिटल है और मेरे राइट साइड पर मेरी आज की प्रॉपर्टी सिटाडेल 7 है। मैं इस वक्त जिन्ना एवेन्यू फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। हमारी आज की प्रॉपर्टी सिटाडेल 7 यहाँ से 1 मिनट के डिस्टेंस पर है। मेरी बैक साइड पर आगा शाही एवेन्यू है और आज की प्रॉपर्टी सिटाडेल 7 यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पर है।
Citadel 7 प्रोजेक्ट बाय चकोर वेंचर्स और इसके सेलिंग राइट स्टेट सोल्यूशन के पास हैं। ये बहुत परफेक्ट टाइम है, आइए इन्वेस्ट करें और अपने मुस्तकबिल को रोशन करें, क्योंकि ये बिजनेस प्रोजेक्ट है और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। आइए चलते हैं सीटाडेल 7 के जीएम उमर खताब से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो इस वक्त साइट पर मौजूद। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umar Khattab, General Manager for Chakor Ventures. Chakor Ventures is a new emerging developer in Pakistan, and Citadel is our pilot project here in Islamabad, Jinnah Avenue, between Jinnah and Ibn-Sina Avenue. Citadel 7 is a commercial project basically, which is mall plus corporate offices with 4 basements. The basement capacity is coming something like 200 plus minus car parks, and along with the CDA approved parking on the back side, which is capacity is something like a 300 plus minus car parking lots. Project duration for the project is something like 4 years plus 1 year is a grace period, and we are trying our best to complete the project before 4 years, including all facade, all structures in each and every MEP, and taking all the services from authorities as well. Excavation has been started, excavation has been completed as well. So we are going to start our structure work maybe within couple of days as well. And our baseline schedule is basically it's a very tight schedule and very aggressive schedule, keeping in mind all the safety measures, all the quality and quality insurance as well. So we will try our best to finish it within 4 years by all means. This is one of the best investment opportunity for for all the investors, for all the end users, for the corporate companies, for the corporate offices, for the new entrepreneurs, and also for the big brands as well. So we wish you all the best, and your cooperations, your supports, and your trust on us that will make this building and build this building on due time. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abbas Khan. I'm the CEO of Chakor Ventures. Basically, we formed Chakor Ventures a couple of years back to change the high-rise building industry of Pakistan. Our main aim was to bring buildings that look chic, modern, contemporary, and they also have a purpose for the tenants who are occupying them. So that's why we are planning on bringing complete business centers or complete residential centers in the middle of the cities to add to the beauty of the city, and also to provide the tenants all the features that they need to enhance their business or to live their own lifestyle. Keeping that in mind, our first project is in downtown Islamabad, right on Main Jinnah Avenue in front of Centaurus. It's right in the heart of Islamabad by the name of Citadel 7. This project is a 20-story building with 4 dedicated basements. The first 5 floors is a dedicated mall. It's a luxury, high-end luxury mall which is going to attract big brands, international brands, and high-end luxury brands are going to be attracted to this. The 5th floor is going to be a food court with 2 dedicated restaurants in it. Then we have 14 floors of offices. All the offices will have views of Margalla and PIMS. Basically, Islamabad is the capital of Pakistan, but all the other big cities like Karachi, Lahore, Multan, Peshawar, Quetta, they are the cream of Pakistan. That's where the majority of the business take place. But Islamabad, and the reason we started here, Islamabad is a very selective city, based because of the government business here and the government offices that are in Islamabad. Secondly, it's very close to 2 major cities, which is Peshawar and Lahore. So a lot of influx is currently in Islamabad for the same reason, and that's why basically this belt of Jinnah Avenue, it has a lot of potential of appreciation and rental return. Islamabad, a lot of the people who were having offices in homes,
they have been taken out of there. So that now they need spaces for offices, and the old blue area is completely packed. उसमें parking की जगह नहीं है. It's quite a mess if you go there in busy hours. So that's why CDA has done a great job in introducing this new belt of a blue area, where they have given keen interest on the parking space that is being provided to the customers, and that's why right adjacent to our plot there's a 15 canal of open parking space that's right next to our plot. 50 meters on the other side of our plot there's another 10 canal of parking space that's going to be available to public. So parking is a big issue. So in this area the parking issues are solved in the new blue area. Customers are going to have business centers which are going to be easily accessible. Due to that, the rental rate has increased and the property appreciation has gone up. In the past 7 to 8 years, there is a 22% appreciation rate per year. The rental rate is almost around 10 to 11% ROI, rental rate return, which is really, compared to even US, UK and the developed countries, the rental return of almost 10 to 11% is very high. So these are the major factors that investors need to think about. Basically secured investment in the sectors of CDA which is allotted by CDA. So there are not a lot of gimmicks or anything like that which can happen within the territory of Islamabad. And then the rental return and the appreciation is pretty, compared to even developed countries like Dubai and UAE, UK, it's pretty good. So at the end, I would like to also mention that we have multiple partners which are brokers and dealer partners. State Solution is one of them. They're doing a commendable job helping us project this project to the market, and also advising us on how we can promote this kind of new way of projecting high-rise buildings in Pakistan, where they are also beautiful from the outside and they are also functionally from the inside with all the latest features. They are helping us with all those features as well. So we thank State Solutions, and I thank all of you for listening to me. आज हमने आपको प्रॉपर्टी टूर कराया स्टेट सोल्यूशन के एक प्रोजेक्ट सीटाडेल 7 का, जो लोकेटेड है न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। उम्मीद करते हैं हमारा आज का ये प्रॉपर्टी टूर आपको पसंद आया होगा। इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए Zameen.com की वेबसाइट पर जाइए और प्रोजेक्ट पेज से मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसके अलावा दीगर सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें। मुझे माही शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।